सड़कों पे नाची निया शर्मा। यार तुम सीरियस? आर यू सीरियस गाइस? इतनी छोटी स्कर्ट पहन सड़कों पर उछल कर निया शर्मा ने की मस्ती, देख लड़कों के भी खड़े हो गए रोंगटे। This is what they write, bro. They will not look at somebody like me for a marriage. उनको क्या चाहिए? ऐसे एक अच्छी लड़की, जॉब करने वाली जो घर से ना निकली हो। I don't remember hanging out. मुझे नहीं पता, मैं दिल्ली के किसी क्लब की शक्ल भी देखी होगी कभी मैंने एज अ टीनेजर और एज अ कॉलेज गर्ल। मैं ये लड़की ही नहीं थी जिसे मेकअप करना आता हो या जिसे काजल भी लगाना आता हो। एंड मैं जिस कॉलेज में जाती थी सिद्धार्थ, वो नहीं होता जहाँ बनियों के रिच बच्चे आ रहे हैं गाड़ियों से उतर रहे, मैं उस कॉलेज में थी। एंड आई डिडंट हैव ऑल ऑफ दैट। इज दिस वेल विद इन द स्टैंडर्ड्स ऑफ हाउ अ गर्ल शुड बिहेव गाइस? बिकॉज I'll behave like that. I'm not that rebel that you think I am. हाय निया, वेलकम टू द मेल फेमिनिस्ट। कैसी हो आप? Thank you. I'm very well, Siddhaarth. कैसा था घर का माहौल? लाइक घर के काम कौन कर रहा होता था? आपके बड़े भाई भी हैं, तो मतलब were there things that were allocated to you just because you thought it was a genderly thing? नहीं, इट वॉज माई ब्रदर एंड मी, और हमेशा से हमारी अपब्रिंगिंग इक्वल हुई है। ऐसा नहीं था कि कोई जेंडर बायस्ड है या फिर कोई घर में उसको ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, मुझे कम, ऐसा कभी था नहीं। एंड आई वॉज ऑलवेज द ब्राइटर स्टूडेंट। मेरा भाई थोड़ा बहुत लड़खड़ा रहा था स्टडीज़ में, so इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा प्यार मिलता था। एंड माई फादर वॉज ऑलवेज लाइक ही वॉज अ ह्यूज सपोर्टर ऑफ माइंड। आई थिंक क्लास 10th के जो मेन बोर्ड्स थे, जो मेरे पापा को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का इंतज़ार था, आई थिंक आई लॉस्ट हिम एट दैट वेरी मोमेंट। तो वहाँ से आई डोंट नो, फिर पूरी लाइफ फ्लिप मार गई बहुत। और हर चीज़ जो आज सेम होती है वो अगले दिन सेम नहीं थी। It was an upside down thing. So yeah, upbringing वहाँ से switch हो गई, and then my brother took over as my father, जिससे मैं खूंखार तरीके से लड़ती थी। हम दोनों ने स्टम्प से लड़ाई की, हम दोनों ने एक दूसरे के ऊपर ईंट फेंक के मारी है, हम ऐसी लाइफ हमने जी। बट देन came that life 10th, he matured, suddenly it was a flip side, and my brother was taking me for मेरे कॉलेज के एडमिशन्स, मेरे फॉर्म्स खरीदवाना, मुझे हर जगह जहाँ पे भी ऑडिशंस हो रहे होते थे वो मुझे लेके जाता था। सडनली माई ब्रदर जस्ट ग्रू अप इन दैट वेरी इंस्टेंट। कहाँ से ला रही हो आप? मतलब वेयर डू यू गेट द करेज एंड द, क्योंकि क्या होता है कई बार हमारी मतलब कंडीशनिंग में ही ये बताया गया है कि इफ यू आर अ गर्ल आपको ऐसे बैठना है, इतना हंसना है, ऐसे ये ऐसे करना है, एंड देन यू हैव दिस लाइक होल रिबेल एटीट्यूड कि हटाओ मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आई एम नॉट दैट रिबेल। मैं हर चीज़ इसलिए नहीं कर रही हूँ कि ये मना है करना। जहाँ पैर खोल के बैठना, इट्स नॉट लाइक अ रिबेल एटीट्यूड, इट्स नॉट लाइक आई हैव टू प्रूव अ पॉइंट, इट्स नो एटीट्यूड ऑनेस्टली। समटाइम्स यू वेयरिंग अ सर्टेन ड्रेस और आप टांग फैला के बैठोगे, वो सही में बुरा लगता है। समटाइम्स वी ऑल्सो एज गर्ल्स वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट बीइंग अ रिबेल एंड हैविंग योर मैनर्स and then also being graceful. There's a thin line between I can still be a rebel and still be graceful. I'm not saying टांगे चौड़ी करके बैठना he will make me look like the kick-ass girl and the badass girl that I am. No. I'm not trying to do that. And there is no image that I'm trying to carry forward, trying to build on that image. No, I'm not trying any of that. There is a certain me which is like that. I will definitely argue with you. I will definitely say no to the things that I'm not okay with. एंड अगेन लाइक मैंने पहले भी इस बारे में बात की हुई है, बहुत सारे लोग यहाँ पे ना नहीं सुन पाते हैं। एंड आई एम दैट गर्ल जो ना बोल के निकल भी जाएगी। आई एम नॉट गोइंग टू सिट बैक एंड फील दैट ओ मेरी फ्रेंडशिप नहीं बढ़ेगी अब इनसे, और आई एम नॉट गोइंग टू सिट इन दैट ग्रुप। आई नो फॉर अ फैक्ट दैट अ लॉट ऑफ पीपल बिकम लाइक very good friends in the very first go. I keep my space, I keep my distance for some time. So if that is being perceived as just rude or arrogant, or I'm saying a rebel or something like that, I think that may be it. But then those people don't know you, right? Yeah. कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम भी है वो गर्ल्स के लिए बहुत स्पोर्ट्स सेंटर में तो मेल ओरिएंटेड ही रहा ना। Women paved their way and got through there. So the training and the facilities are still catering to men. इसलिए suddenly the women are just like we can be like that also. Yeah. Because the men are supposedly like that, तो हम भी वैसे ही रहेंगी। उसमें क्या बुरा? No, there is nothing wrong about anything. However you want to be, the girl wants to be the queen bee, good for you. The girl wants to be a tomboy, good for you. I mean, we just need to respect everybody. बॉक्स करने की भी तो वो नीड हो जाती है ना दुनिया की। I don't know, but वो उसमें उस बॉक्स में घुस कौन रहा है, आप मुझे बता दो। आज किसी लड़की को आप बोल के देख लो एक बार, आपके मुंह पे ना घुसा मार दे उल्टा। Nobody is trying to fit in any box, and that's where things are falling apart. Probably relationships are falling apart because there was a time when one of them were compromising. That was mostly the woman. Today, no one is compromising. The girl needs her space. The girl is doing well. The guy is doing well, and when things clash between them, none of them is ready to give up. None of them is ready to bow down, or I'm saying, or compromise in a matter, and that's when they both decide to just go their separate ways. Correct. And that's not wrong. You know what I mean? That just it was always
the parameter was always the man would provide, the woman would take care, and she will, you know, pick his shoes up and, you know, iron his clothes. And this is the conditioning that we've grown into, and our last generation, our parents, our grandparents, we've seen that household, right? But आज की दुनिया में being married is a different definition altogether, because the women today are not fitting in the box that you have made, guys, and it's not going to happen anymore. You know what I mean? It's just that difference. You respect the woman for who she is. If she's working, you got to respect that. You cannot tell her to her face that tomorrow you get married, and when you're delivering a baby that you stop working, only the man's going to provide for you. If the woman is working, if somebody is like me, मैं कोमा में चली जाऊंगी यार. मेरे से मत बोलना ये. And if that's going to hamper my marriage, and if somebody is not ready to get married to me just because I like my work life more and independence more, which I have really worked hard to get. I had no option, right? I'm not sobbing, and I'm not trying to harp on the same string telling everybody that I lost my father and we had a different life. I didn't want to burden my brother and my mother for my marriage budget, because I've earned that life. I've earned that independence. I'm making kick-ass money. I'm living my own life. But having said that, I'm saying that tomorrow they will not look at somebody like me for a marriage, because there is a bracket, and you're right. या उनको क्या चाहिए, ऐसे एक अच्छी लड़की, यू नो, जॉब करने वाली जो घर से ना निकली हो. सो आई एम लुक्ड एट एज दिस रिबेल एटीट्यूड गर्ल, जो जिसमें से कुछ सही नहीं है. आई एम अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, आई एम अ वेरी नाइस गर्ल, गाइस. नोबडी नोज दैट. How hard was it being an outsider, like casting run-ins, etc.? So people, I don't know, keep talking about dark skin, this skin, or, you know, dusky girls, ये girl, वो girl. I have never faced it. मतलब वो मेरे आर्टिकल्स आते रहते हैं ना यार, brown skin and girls that didn't, you know, had faced a lot of difficulty finding work because of their skin color. I never faced it. तो ये कहाँ से लिख रहे हैं ये लोग फिर ये सब? मुझे क्या पता, मीडिया का जो मन में आता है वो लिखते हैं. Shit, सच्ची? You haven't read media articles the way they write about, you know, the shittiest articles. I probably ignore them now, or I don't. निया शर्मा का पिछवाड़ा दिख गया, रोड पे नाची, ऐसे लोग भड़क उठे. ये कहाँ से, ये हिंदी आर्टिकल्स ना, मेरे से क्रिंज मचता है. But can you fight with any of them? आप अभी खोलो, आप let's open the Google. Let's type Nia Sharma, और नीचे बस एक बार आर्टिकल्स देख लो. Even if I've just probably danced on some Universal Studios, सड़कों पे नाची निया शर्मा. यार तुम serious? Are you serious, guys? Like you dance somewhere, so what? अरे I danced everywhere, man. मेरी मर्जी, मैं गई हूँ अपने ट्रिप पे, मेरा जो मन में आएगा मैं वो करूँगी यार. ऐसे कैसे होता है लेकिन ये मैं एक्चुअली but let's see it, okay. ऐसे कैसे होता है, ऐसा सच्ची हो गया. हाँ, you did a throwback. Can you please read all the articles? ऐसे scroll में, पूरा मत खोलो. Just the articles of every, just the headline of every article that you see. The third headline is hotness meter sultry black dress. नहीं ये भी नहीं. हिंदी वाले, please हिंदी वाले पढ़ो. ये तो बहुत इज्जत हो गई. इतनी छोटी स्कर्ट पहन सड़कों पर उछल कर निया शर्मा ने की मस्ती. देख लड़कों कि भी खड़े हो गए रोंगटे. हाँ, खड़े हो गए रोंगटे. अगर आप आगे नहीं बढ़ते तो ये कहाँ से? Who writes these? I want to know the name of the person who's right. And ये हर दिन का है. और ये reputed है यार काफी. They love me so much. Not, I'm sure सबके लिए आ रहे होंगे, but because अब मेरी प्रोफाइल है, मैं अपनी खोलूंगी. This is what I'm reading about myself यार. और मैं कहाँ नाची पता है? एक बार मेरा Instagram खोला. I was at Universal Studios dancing around. Universal Studios. मैं सड़कों पे नंगी नाचती हूँ क्या? This is what they write, bro. तो मैं आप लोगों को एक सच How बताता fair हूँ. is that? You please tell me that. Since you are with me here, मैं गाड़ी चलाते हुए शो करता हूँ. उसमें भी मेरी एक अच्छी आर्टिस्ट आई थी. बट रिसर्च के दौरान जब मैंने उनको गूगल किया तो मेरा प्रॉब्लम ये था कि सारी हेडलाइन सिर्फ सल्ट्री, हॉट, यही है. नेकलाइन. ये भी मेरा भी यही आता है. डीप नेकलाइन, डीप क्लीवेज, बैकलेस. हाँ है ना यार, अभी मान लो ना. दिस इज हाउ आई ड्रेस अप. क्या ये इस वजह से है कि ऑडियंसेस ने आपको टीवी में एक बहू के किरदार में देखा है, इस वजह से उनको ये समझ ही नहीं आ रहा? That's it. It ends there. That's the only thing. Had I been this woman who had started in Bollywood directly, had I directly been in Bollywood and done things, ये कभी आता भी नहीं है सब मेरे बारे में. Just because it has, my starting was from TV, which I was destined to be here. I had no aspirations or my life's agenda to be on TV or this and that. I was trying to be a journalist for all I know. This life has been a dream life for where I've reached, what I've done, the life that I'm living right now. It was all in my head as a 15-year-old. Before that, do you remember going out on dates, being allowed or not allowed? Delhi, you think so? So again, it's just this side of my life now that I'm in Mumbai, और एक दिल्ली की लाइफ थी जहाँ पे कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, और अगर कभी बाहर घूमने जाना होता तो मेरी मॉम और मेरा भाई मुझे लेके जाते थे. I don't remember a time जहाँ पे मुझे अकेले कभी अलाउ किया गया, because also can I tell you, घर का माहौल चेंज हो गया ना एकदम से. So my mom always would think कि बिगड़ ना जाए, you know, she has raised her. After that,
she has raised us with a lot of guard, you know. She never let me be free. और कहीं जाना भी होगा तो, और मैं कभी थोड़ा बहुत भी लेट हो जाती थी ना, फ़ोन पे भर भर के गालियाँ आ रही होती थी. उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आता था, पर मैं आज आपको बताऊँ, इट वाज जस्ट एक माँ का डर था यार. दिल्ली वाज नेवर सेफ. आई डोंट रिमेंबर हैंगिंग आउट. मुझे नहीं पता मैं दिल्ली के किसी क्लब की शक्ल भी देखी होगी कभी मैंने एज अ टीनेजर और एज अ कॉलेज गर्ल. मैं ये लड़की ही नहीं थी जिसे मेकअप करना आता हो या जिसे काजल भी लगाना आता हो. एंड यू नो, मैं जिस कॉलेज में जाती थी सिद्धार्थ, वो नहीं होता है जहाँ बनियों के रिच बच्चे आ रहे हैं, गाड़ियों से उतर रहे, मैं उस कॉलेज में थी. एंड आई डिडंट हैव ऑल ऑफ दैट, यू नो. हम लोग जब कई महिलाओं को इसी शो पे मिलते हैं, वी लर्न अबाउट कि अगर आपके बड़े भाई थे या कोई भी सिबलिंग था, एल्डर सिबलिंग था, सो देन पीरियड कॉन्वर्सेशन इन द हाउस आल्सो वेंट डिफरेंटली. द मेन हु कम फ्रॉम फैमिलीज व्हिच हैव हैड फीमेल सिबलिंग्स, दे आर मोर अवेयर अबाउट पीरियड्स एंड एवरीथिंग एल्स दैन just. So I will tell you, I'm from a Brahmin family. तो मेरी फैमिली में इतना ओपन तो हम नहीं थे कभी भी. My mother obviously very specifically told me about period, but घर में उस बारे में बात होना कभी हुआ नहीं. But now I have reached a stage where I'm so free. When I'm having, my stomach hurts like crazy. So it's not like my brother sometimes come and stay with us, so he knows. So मैं उसको बता देती हूँ that, you know, it's my period cramp or this and that. My mom is like, अरे अब सब कुछ बता देगी क्या? So she's still somewhere not okay with this, but then we are in a culture like that, and if I don't talk to my brother about this, what I'm going through and what not, and he understands that, you know. So I have reached a stage in my life where a lot of things for me are okay, Siddhaarth. The way I dress up, for that matter, you know, the things I talk, but how it's perceived by other people, how they look at me, and when they come and tell me that, oh, you know, Nia, जिस बिंदास एटीट्यूड से आप बोल जाते हो, जो चीज़ें आप कर जाते हो, यू नो, आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डू इट. तो वहाँ मेरा हिलता है फिर कि एम आई गोइंग रॉन्ग समवेयर, एम आई स्पीकिंग मोर देन रिक्वायर्ड, एम आई सेइंग थिंग्स व्हिच आर not usually spoken about. But that's exactly what we're fighting for ना in feminism. What we're trying to do is that मैं as a लड़का ये सेम चीज़ कर लेता ना आराम से. जब औरतें जब बोलते तब क्यों ये बोला जाता है कि थोड़ा ज़्यादा बोल. हाँ, पर वो है सिद्धार्थ, यू नो व्हाट आई मीन. सामने से जब बहुत ज़्यादा तारीफ सुनने को मिलती है ना, और होती है ऐसे, हर कोई आके मुझे बोलता ज़रूर है, बट कई बार ना, द मिनट यू टर्न योर फेस, यू नो, पीपल आर लाइक क्रास है. आई मीन मेरे मुंह पे तो सब आके बहुत अच्छा ही बोलते हैं. आई एम नॉट रिफ्यूजिंग दैट. मैंने शायद सोचना बंद कर दिया. नहीं, आई एम जस्ट सेइंग दैट आई एम अवेयर कि वो एक तारीफ को कितने तक अपने दिमाग पे लेने और कहाँ साइड रखना है, यू नो, बिकॉज यू गॉट टू नो वेयर somebody is trying to extract something out of you or they want something. But financial independence also for women gives you a lot of empowerment, right? I feel powerful. Tomorrow, when I'm marrying somebody, it will not be for money, is what I know today. I've earned that. You know, you can be rest assured I'm not after your money. I'm not after the property of yours once we get divorced, that people are very scared of. You know, in families, everybody is like, prenups are a thing. Yeah, prenups and all of those things. I don't think I'm going to be that woman. Even if things don't go my way in life or my marriage does not work in future, I'm never going to be about, the fight's not going to be about for his money or, you know, you didn't give me that or you didn't. I'm sure it is a huge issue today, but I want to be so financially powerful in life that nobody can break me, even if you go away from my life. It'll be a heartbreak, yes, I'll cry about it, yes, everything's going to go haywire in my life, but I'm going to get back up. You know, this much independence I need in life, the financial independence. कुछ हमारे सवाल होते हैं मेल फेमिनिस्ट के स्टैंडर्ड जो हम आपसे पूछेंगे. Any message to the 16-year-old self that you would like to give? Hey, I am that girl that you always wished that I be at 30 or 28 or this thing, and I do speak very good English, you know. So उस वक्त ना Were you conscious? हाँ, मतलब अभी मैंने वो I worked on it. I worked on everything, you know. जब मैं 16 साल की, बहुत छोटी थी ना, so my father took me to this trip, you know, where he was working on. तो मैं वहाँ लोगों को देखती थी, everybody was like फर्राटे English बोल रहे होते थे, और मुझे आती नहीं थी. मैं अपनी मम्मी के पीछे छुप जाती थी, you know, जब मेरे से कोई कुछ भी English में बात करता था. So मुझे नहीं पता था. So my mom would be. So today I am that girl. You know, my mother is standing, and then I am conversing with them, and I am explaining, and I say, hey, listen, hey, bro, what do you want? So all of that. My mother's always like. My she mother must have that standing look now. looking at you. Now she is chilling. You know. ये बता दो last एक as an advice to all the girls watching this. How can you get the confidence that you may to pick a clothing that you like and wear it and flaunt it? But because it's actually looking good on my body, bro. I mean, nobody else has to come and tell me, oh, you're not looking nice, or you're looking nice. You have a mirror at home. Watch yourself. If you look funny to yourself, don't wear it. If you think, oh, wow, did I just carry it well? Let's go out, man. So you can't please everybody with your dressing. Not everybody's going to like it, you know. I'm saying it least matters how everybody else is going to take you.
थैंक यू। कैसा लगा आपको? It was fun actually. I was so nervous. ऐसे मैं क्या बोलूँगी, अभी बोर हो जाऊँगी, मैं खुद ही इतनी लंबी बातें फेंकूंगी. But नहीं, no, नहीं, बहुत मजा it आया। wasn't that. And thank you so much. You hug? Of course I do. Thank you so much. But thanks for asking. That's very sweet of you.